Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 9 of class 4. The chapter name is multiplication of numbers. Dear student, we already completed our 7 part. There we will learn how we can do the multiplication by the uses of tables, by the uses of the traditional methods and different types of methods we are considered there about the multiplication. Multiplication को लेकर के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे मेथड्स थे उन्हें हमने समझा और एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर चुके थे हमारे प्रीवियस पार्ट्स में. सो जब हम एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू थे, इट मीन्स हमने स्टार्ट कर ली थी एक्सरसाइज 9, जहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज आवर पार्ट नंबर 8. एंड इन दिस पार्ट हम इस पार्ट में हमारी जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9 विद द क्वेश्चन नंबर 9. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, यू कैन सी, सॉल्व इट. यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक 2 डिजिट वाले हों, 3 डिजिट वाले हो, देवनागरी स्क्रिप्ट बेस्ड हो, इन सबको हम रैंडमली सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट. व्हाट इज दैट, दैट इज हियर 89 मल्टीप्लिकेशन बाय द 18. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 डिजिट का 2 डिजिट से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, बाय द 10 वाला प्रोसीजर अपना सकते हैं, ठीक है, या सिंगल रो वाला कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड. तो जो मेथड हमें अच्छा लगे हम उससे कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए हमारा फर्स्ट नंबर है 89, सो वी कैन राइट देयर 89. सो हियर 89 द होल नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय द 10, okay, add by 89 multiplication by the 8. फर्स्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं इसको, एक्सपेंड करके हम कर रहे हैं. अनदर वे, यू कैन सी द 10 टाइम, सो इजीली वी कैन पुट द 0 होल नंबर वी कैन 10 टाइम. ओके, सो यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया. आफ्टर दैट वी कैन चेक द अनदर टेबल इज 8 टेबल, तो 9 टाइम्स 72, सो वी कैन इजीली राइट 2 एज our answer and 7 is our carryover. 8 is the 64, 7 more, so we have 4 after the 64, then 71 is our number. So अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हें ऐड करके देखेंगे. चलिए फाइंड करते हैं. 2, 9 and 1 10, 8 and 8 16, so this is our answer of the multiplication. Clear? चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया बाय द एक्सपेंड फॉर्म. एक्सपेंड फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट किसी नंबर को हमने 10 के फॉर्मेशन में क्रिएट किया. 10 + 8 इज द 18 नंबर. 89 को हमने इसको मल्टीप्लिकेशन दिया एंड एट लास्ट एडिंग के बाद में हमें प्रोडक्ट फाइंड हो गया जो हमारा आंसर है. चलिए नेक्स्ट को देखते हैं. देयर इज अ 3 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय द 2 डिजिट नंबर. इजी वे है, ट्रेडिशनल मेथड हम यूज करने वाले, डायरेक्टली लाइन बाय लाइन मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. 7 से हम 9 को कर रहे हैं. 9 7 जा 63, so we have 3 6 as our carry over. Now time to multiplication 7 by the 0, 7 zeros is 0 and we have 6 as carry over, so total amount goes as 6. Clear? Now time to multiply 3 by the 7, that is 21. That is the first row. Now time to put a 0 there. Why we should put there? Because now we time to start the tens places values find out. अब हम tens places को जो find कर रहे हैं तो हमें पता है हमें पहले उसको 10 के फॉर्मेट में क्रिएट करना होगा. सो फिर हमने वहाँ पे 0 पुट कर दिए. चलिए, बिकॉज 0 क्या करता है, 0 एट लास्ट 1 0, सिंगल 0 क्या कर रहा है, सिंगल 0 10 टाइम कन्वर्ट करता है किसी नंबर को. अब 8 की टेबल का टाइम है. 8 9 जा 72, so we easily write 2, 7 is as carry over. 8 zeros are 0, 7 we have in our hand, so total amount goes as 7. 8 3s are 24, so easily we write 24 whole number there. Now time to add the all rows. So there is 3, there is 8, again 8, again 6 and 2. This is the final product of the number 309 multiplication by 87. So this is our answer. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. Here you can see the देवनागरी स्क्रिप्ट इज here. So in the देवनागरी स्क्रिप्ट सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने नंबर्स को, देन हमें इजीली मल्टीप्लिकेशन कर देना है. वी हैव 3 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय द 2 डिजिट नंबर, सो इजीली वी फॉलो आवर ट्रेडिशनल मेथड. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is the number? Identify करते हैं 3 4 5. It means 345 is our number and another number is 34. So सबसे पहले हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे होल नंबर से, देन हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे होल नंबर से. We cannot call that is 3, that is our 30. 3 tens. Clear?
चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 5 20, so easily we can write put 0 and 2 is our carryover. Okay, 4 4 16, we have 2 in our hand, then total amount goes is 18, so we write 8 and 1 is as our carry over. Now time to multiply 3 by the 4, that is 12, and 1 is in our hand, then our number becomes 13. Easily we write first row, the number is 1380 in our first row. Now time to check our tens places, so easily we put the 0 at the last of the number to create 10 time of the number. Okay, now time to check our next number. What is that? That is 3. So in short we can multiply the whole number by the 3 now. So 3 की टेबल 5 टाइम जब हम बोल रहे हैं तो हमें मिल रहा है 15, so easily we can write 5 there and 1 is its carry over. Now time to check 4 by 3, that is 12, 1 is in our hand, then 13, so easily we can put there 3 and 1 is as our carry over. Now 3 3s are 9 and 1 in our hand, so whole number becomes 10. Now time to add and find the product of the numbers. So what is that? 0 0 is a 0. Okay, 5 and 8 we can create 13, so easily we can write there 3 and 1 is a carry over. So now time to 3 3 is a 6 and 3 3 6 and 1 more, then 7, so easily we can put there 7 and we have nothing to carry over, so 1 is our next number and 1 is the last number. So amount is 11,713 is our answer of the number it called by the product. So dear students, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स हों चाहे हमारे क्वेश्चंस हों उन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए? डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे मेथड्स हैं वो हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, और जहां हमें यूज़फुल लगे हम 3 टाइप्स वाला कर सकते हैं, हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सपेंड फॉर्म करके कर सकते हैं, हम टेबल को डायरेक्ट काउंट करके भी आंसर ला सकते हैं. एंड व्हाट इज द आंसर? द आंसर विल बी आवर प्रोडक्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. हियर इज द नेक्स्ट नंबर्स. यू कैन सी 764 is our first number, multiplication by the 52. So easily we can follow our traditional method because we have in our hand 3-digit numbers, multiplication by the 2-digit number. So in short we should start our first number, that is 2. 2 4s are 8, so easily we write there 8. 2 6 are 12. 12 is 2-digit number. We can't write all 2-digit number in single row, so easily we write the last number unit, that is our 2. 1 is our hand as carry over. Now time to check 7 multiplication by the 2, then answer will be 14. We have 1 is carry over, so total amount goes is 15. Easily we write there 15. This is our first row. Now time to check our another row, that is the place where you have as tens places, so easily we should convert the whole number in tens numbers. So 0 we can put there easily. Okay, now time to check 5 tables. 5 4s are 20, so easily we can write there 0, 2 as carryover, 5 6 are 30, then we have 2 in our hand, 32 is total amount, so 2 we can write there, 3 is our carryover, so 7 5 is 35, 3 in our hand, so total number goes as 38. So this is our second row. Now time to check all numbers by the product or sum. So चलिए प्रोडक्ट को फाइंड करना तो क्या करना है? सम करना होगा. So चलिए स्टार्ट करते हैं. 8 and 0 goes as 8, 2 and 0 create 2, 5 and 2 create 7, 8 and 1 9, and 3 is the last number. So final amount is 39,728 is our answer by the multiplication of 764 by 52. Clear? चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. Here is the another number in the form of 3-digit number, multiplication by the 2-digit number. So easily we can follow our traditional method. Traditional method says you should count, you should create, you should multiply all numbers together by the formation. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं formations के साथ में. देखिए here you can check the tables should be 30 table, not 3 table, 30 table, and 30 table we can create by the 3 table by the putting 0 at the last. क्लियर है ना? सो 0 हमने पहले पुट कर देते हैं, 10 टाइम क्रिएट कर देते हैं. सो ट्रेडिशनल मेथड सबसे इजी मेथड होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 2 2 is 4, सो आंसर 4. 2 7 is 14, सो 14 में 4 राइट करेंगे, 1 इज कैरी ओवर लेंगे. 5 2 is 10 एंड 1 इज इन आवर हैंड, सो टोटल अमाउंट गॉट 11. नाउ टाइम टू क्रिएट 10 टाइम. क्रिएट हो गया 10 टाइम. 0 पुट करते 10 टाइम होता है. कैसे होता है भाई? देखो 10 का 10 टाइम किया, 0 पुट किया, 100 हो गया. 100 का 10 टाइम किया, 0 पुट किया, 1000 हो गया. सो 10 टाइम होल नंबर का क्रिएट करना, लास्ट में 0 पुट कर देते हैं. If we have 3 digit now, then we can create the 100 time. And what we should do to do that? हमें क्या करना होता है तब हमें 2 टाइम्स 0 पुट करनी होंगी, बिकॉज वी शुड फॉलो द 100 रूल्स. तो यहाँ पे अब हम 3 की टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं. 3 को हम क्या करेंगे, जो हमारा होल नंबर है उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए
3 2 is 6, so easily we can write there 6. 3 7 is 21, so easily we can write 1 and 2 is carry over. 5 3 is 15, 2 in our hand, 17 is our number. So now time to add the whole numbers. 4, there is 6 4 10, so we can write 0. 1 is as carry over, 1 1 1 3 time हो गया, 3 हो गया, 8 is here and 1 is here. So total amount goes as 18,304 is our amount. Clear? चलिए लास्ट नंबर देख लेते हैं ऑफ द चैप्टर ऑफ द सीरीज. ओके, लास्ट क्वेश्चन सेज आई एम ए देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर. आई हैव 3 डिजिट नंबर इन आवर फर्स्ट रो, 2 डिजिट नंबर इन सेकंड रो. आई कमांड यू टू डू मल्टीप्लीकेशन. तो चलिए स्टार्ट कर ले मल्टीप्लीकेशन को. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हमें नंबर को आइडेंटिफाई करना है बिकॉज न्यू स्क्रिप्ट है ना हमारे लिए. सो नंबर इज 806. इट मीन्स 806 is our first number. 4 and 0, it means 40 is our another number. In short, here you can see the 0. So this is the basic rule of the 0, and 0 says if you add 0 in any number, then you get same number. If you subtract 0 in from any number, then you find same number. But if I multiply any number by the 0, then I find all 0, nothing. In mathematics we call nothing means 0. So यहाँ 0 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. 0 की टेबल 6 टाइम किया भाई, 0 क्रिएट, 0 0 is 0 हो गया, 0 8 is 0 हो गया. फर्स्ट रो कंप्लीट. अनदर रो में वी हैव 4 10s. इट मीन्स वी शुड क्रिएट 10 टाइम ऑफ द नंबर. सो सबसे पहले 0 पुट करेंगे. ओके, 4 6 is 24 होता है. सो वी राइट देयर 4, 2 is कैरी ओवर, 4 0 is 0, 2 हमारे पास में हैंड में है. सो वी राइट देयर 2 and 4 8 is 32. So we write there 32. Okay, now time to count or collect all numbers together to find the product. 0, 4, very good, 2, another 2 and 3 is the answer or product of the number. Clear? Clear हो गया. चलिए dear student, this was the exercise of exercise 9 chapter 9. There we will learn how to do multiplication of the numbers, 2 digit multiplication, 3 digit multiplication, all number together and 10 time 100 time multiplication also. So ये सारा कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर से क्लियर कर लिया, एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली, एंड आई होप आपको कहीं भी किसी तरह का कोई इशू नहीं आ रहा होगा बिकॉज हमने अच्छे से ग्रेसअप किया है नॉलेज का अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. सो दिस वॉज द चैप्टर and now finished. So keep watching, keep learning. See you soon in next class. Thank you.